हेलो एवरीवन। नया दिन नई शुरुआत। आज हम लोग नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसके अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल सेफ्टी के रिलेटेड हम लोग वीडियोस डालेंगे। और एक बहुत मेजर जो रिक्वेस्ट आया था वो ये आया था दैट इट शुड बी इन द लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। मैं कोशिश पूरी करूंगा कि मैं इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको समझा सकूं, ताकि जो लोग हिंदी नहीं समझते हैं उन्हें इंग्लिश समझ में आ जाए, जो लोग हिंदी नहीं समझते उन्हें इंग्लिश समझ में आ जाए, और जिन्हें इंग्लिश समझ में नहीं आती उन्हें हिंदी समझ में आ जाए। सो नाउ बेसिकली इंडस्ट्रियल सेफ्टी, बिकॉज ये जो एलिमेंट है ये हमारा बहुत ही कॉमन या बहुत ही सधा हुआ एलिमेंट है। हर किसी को इंडस्ट्रियल सेफ्टी के बारे में जानकारी लेनी आवश्यक है, लेकिन उसको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में सीखना। See, learning about industrial safety or construction safety is easy, but unless and until it is being structured properly, you'll not get the proper understanding. So what we have done is that we have tried to do this video in both Hindi and English. So for people who don't understand English can understand Hindi. Those who cannot understand Hindi can understand it in English. So ये दोनों को combine करते हुए एक वीडियो हमने बनाया है। एंड इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और इन एलिमेंट्स को हम लोगों ने किस तरह से ब्रेक किया है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले सेफ्टी का एक जनरल इंट्रोडक्शन देते हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश में, सेफ्टी इज एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिल्डिंग अ सेफर एंड हेल्दियर वर्क एनवायरनमेंट शुड बी मैनेजमेंट्स टॉप प्रायोरिटी। करेक्ट। सो फॉलोइंग प्रॉपर सेफ्टी प्रोसीजर्स begins with individuals and ultimately affects each person in our community. We must all work together to ensure that the work environment are safe and healthy. General rules apply related to health and safety and environment for every site or company, irrespective of the task the workers are responsible for. These rules must always be respected. So in general, अगर जब हम लोग बात करते हैं कि सेफ्टी किसकी जिम्मेदारी, तो सेफ्टी हर किसी की जिम्मेदारी है, यस। और अल्टीमेटली इसकी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो टॉप मैनेजमेंट के ऊपर होती है, जो कि प्रायोरिटी होनी चाहिए उनकी। करेक्ट। प्रॉपर सेफ्टी प्रोसीजर्स हर इंडिविजुअल को फॉलो करना चाहिए। और जब बोलते हैं ना कि भी यू लीड बाय एग्जाम्पल, या आप जो है एग्जाम्पल कि भी आप क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, खुद तो आप कर नहीं रहे हो, तो पूरी कम्युनिटी के ऊपर उसका असर पड़ता है। देन एंड देन किसी भी वर्क प्लेस के ऊपर एनवायरनमेंट या सेफ्टी रिलेटेड टू हेल्थ, ये सब चीजों की ध्यान देना क्यों जरूरी हो जाता है, ताकि देखिए आप काम करने जाते हैं, सो यू वांट टू वर्क इन एन हेल्दी एनवायरनमेंट, राइट। आप एक अच्छे एनवायरनमेंट में काम करना चाहते हैं, आप ऐसा नहीं चाहते ना कि भाई आप बीमार पड़े, राइट। सो द जनरल रूल है हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट का, हर एक साइट पे इररिस्पेक्टिव कोई भी टास्क आप कर रहे हो, लेकिन हमेशा ये इंश्योर करिए कि हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट के जो रूल्स हैं इन्हें आप प्रॉपरली अंडरस्टैंड करें और इन्हें इज्जत दें, रिस्पेक्ट दें। करेक्ट। सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, दैट वाज रिगार्डिंग द इंट्रोडक्शन टू द इंडस्ट्रियल सेफ्टी। अब आइए देखते हैं कि हम लोग इसके अंदर इंक्लूड क्या क्या करने वाले हैं या क्या चीजें इसके अंदर आने वाली हैं। करेक्ट। Organizing for safety. So many people believe that if we provide a safe workplace and well-guarded machinery, trained operators and workers are clearly laid down procedures and vigilant supervision, there cannot be any accidents. Correct? However, even with these optimum conditions, many accidents take place. Accident prevention basically depends upon the motivation of the employee to work safely. It is necessary to create and maintain workers' interest in the importance of safety. This process will cultivate safe working habit among the workers and supervisors. So the top management should define, document, endorse and review the OHS policy, which is appropriate to the nature, scale and the hazards and risk of its activities.
So the prime focus should be on these elements. So हम जब अब इसे मैं हिंदी में भी समझा देता हूँ. So organizing for safety. जब हम लोग बात करते हैं organizing for safety. So what we do? Organize करने के लिए बोले तो हम लोग क्या करते हैं? भाई मशीन गार्ड होना चाहिए, बंदों को ट्रेन कर दो और विजिलेंट रहो, सुपरविजन करो, एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए. अरे बाबा, आपके चाहे कितने ही आप मशीन गार्ड लगा लो, ऑपरेटर को ट्रेन कर लो, वर्कर को क्लियर प्रोसीजर बना के दे दो, विजिलेंट रहो, लेकिन उसके बावजूद भी ये सारी परिस्थितियां होने के बावजूद भी एक्सीडेंट्स होते हैं. क्यों होते हैं? सो एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो इस वजह से होते हैं क्योंकि आप आदमी हैं. आदमी की होता है ना, क्या मैन इज टू एरर, है ना. अगर आदमी है तो एरर्स हैं. सो आदमी क्या करते हैं, बेसिकली आप चाहे कितनी भी तैयारी करें लेकिन लोग उसे अवॉइड करना शुरू कर देते हैं या सोचते हैं 1 मिनट का ही तो काम है, कोई बात नहीं, जरा सा ही तो करना था, थोड़े ही समय तो करना था. ये सारी चीजें जो हैं ये दुर्घटना की ओर आपको झुकाती चली जाती है. सो दीज आर बेसिकली हैबिट्स ऑफ इंडिविजुअल्स. अब मशीन की तो हैबिट नहीं होगी ना, आज मेरा मूड नहीं है काम करने का, ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन आदमी का होता है. सो आदमी को जब आप किसी भी प्रीमाइसेस में जब आप आते हैं तो उनका माइंडसेट चेंज करने के लिए आप क्या कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो जाता है. कि फ्रस्ट्रेटेड आया है, ठीक है, क्या हमने उसको वर्क एनवायरनमेंट में ढलने के लिए क्या प्रोविजन सेट किए हैं. तो ये एक चीज मिसिंग होती है मोस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, एंड दैट इज आप चाहे कितने भी फ्रस्ट्रेटेड आए हो लेकिन आप ऐसा क्या करते हैं कि वो उसका फ्रस्ट्रेशन भूल के वर्क एनवायरनमेंट के अंदर ढल जाता है. ऐसा नहीं होता, होना चाहिए कि भाई आदमी आया और तुरंत काम, चलो भाई काम पे लग जाओ. गिव देम टाइम, let his mindset be set in that motivated, safe working environment. This is very important part. So basically top management का जो रोल है वो ये होना चाहिए कि वो ना सिर्फ डॉक्यूमेंट बनाए, उन्हें बोलते हैं ना लीड बाय एग्जाम्पल करें, उसे एंड्रॉस करें. OHS पॉलिसी क्लियरली आपके एम्स को लेके डिफाइन होनी चाहिए, एंड देन नेचुरल तरीके से आप उसको किस तरह से अपने काम में कार्य ला सकते हैं उसके ऊपर काम करते हुए आप इस चीज को आगे लेके जा सकते हैं. सो दिस इज बेसिकली अबाउट ऑर्गेनाइजिंग फॉर सेफ्टी. सो व्हाट वी सी डिपेंड्स मेनली ऑन व्हाट वी look for. So organizing for safety, when we were talking of this, is that there is a reason why I wrote this line. So this line primarily explains this, that what we see depends mainly on what we look for. देखिए, जब आप सिक्का घुमाते हैं, जमीन पे रखिए, सिक्का को घुमाना शुरू करिए तो आप कई लोगों को हेड दिखाई देगा, कई लोगों को टेल दिखाई देगा. अब ये क्यों दिखाई देगा? क्योंकि आप जो देखना चाहते हैं आपको वो दिखाई देगा. So this is what the perception is. अगर कोई भी एक घूमती चीज है तो आपको क्या देखना है वो आपके ऊपर, आपके नजरिए के ऊपर डिपेंड होता है ना, परसेप्शन. So each individual's perception relies on it. So when we are talking about organizing for safety, so the core focus should be what? The core focus should be on how well you have, irrespective of what the mood, what the impression is, but how you have molded it. So that's why morning sessions, morning before starting the work, what they have to do so that they come back to the safe working state. So lot of organizations have done what? First, क्या करती हैं organization? So first what they do is they have safety prayers, they have a pledge, correct? Before starting work they have a pledge, or they have a small group of people who have come, so the supervisor is responsible to do something like, okay, let us induct them. So how are you feeling today? Just 2-3 minutes, 3 मिनट में प्रलय नहीं आ जाने वाला है, लेकिन वो जो 3 मिनट का या 2 मिनट का सिर्फ एक इंडक्शन है कि हाँ जी, so how is everyone feeling today? Okay, good. So let us start with our pledge, and then so
ये सिर्फ तरीके, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कल से अपने यहाँ पे प्लेज शुरू कर दीजिए, ये सब तरीके हैं, प्लेज करना, प्रेयर करना। काफी सारी कंपनीज में बहुत अच्छी हैबिट्स होती हैं दैट दे स्टार्ट देयर वर्क विद अ प्रेयर। सो व्हेन दे स्टार्ट विद अ प्रेयर, उसके बाद में फिर वो बोलते हैं कि या हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे, जैसे बोलते हैं ना कि कई लोग आते हैं वो इतनी शक्ति हमें देना दाता है, कई लोग कुछ और दे डू देयर ओन रेगुलर प्लेयर, कई लोग सेफ्टी प्लेज पढ़ते हैं, सो टूल बॉक्स टॉक देते हैं या कुछ भी है। सो ऑल दीज एक्टिविटीज आर नथिंग बट primarily organizing for safety. That means preparing the individual that yes boss, चलो अभी काम करने का है, तो आपको काम जो करना है वो आप कैसे करेंगे, उसके रिलेटेड हमने उन्हें जानकारी भी दी और उनके साथ में डिस्कशन भी किया. So this is how we start with the organizing for safety. Organizing safety, we have talked a lot. So let us understand that what are the elements in organizing safety. So what are the elements that you need to take care when you are saying that we are trying to organize safety. So to organize safety, what do you have to do? Let us see. So let us start. Organizing for safety. So when we try and organize for safety, what are the things that are to be looked into or to be considered? First, safety organization, safety committees, safety information, safety posters, safety contents and suggestion schemes, safety education and training schemes, safety training and supervisions. So these are basics. देखिए, लर्निंग और ट्रेनिंग दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, आप दोनों चीजों को मिक्स कभी मत करिएगा. So that is why safety education and training is separate and safety training for supervisors is different. So it is very important to understand that why these two things are separate. So we will be discussing today on safety organization. Let us start with safety organization. So safety organization is the agency employed by management to assign responsibility for accident prevention and to ensure performance under that responsibility. According to safety status, it is the duty of the management to provide a safe workplace and instructions on the hazards involved in operations and indicate the safe way of performing a job. Now, जब भी हम लोग बात करते हैं जैसे सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, सो सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सो बेसिकली सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन कोई अलग से ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसी एजेंसीज हैं, या जैसे बोलते हैं ना कि भाई आपने किसी कंसल्टेंट को, थर्ड पार्टी को एम्प्लॉय किया हुआ है जो कि आपके वर्कर्स को ट्रेन करता है. सो ये इंडिया में कल्चर नहीं है, बाहर है. So what is safety organization? Safety organization basically is the assigned responsibility for accident prevention. अब accident prevention के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, अरे यार ये तो उन्हें कैसे पता होगा? So आप अपने यहाँ पे एक सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन या बोलते हैं ना कि कमिटी फॉर्म करिए. तो सेफ्टी कमिटी के अंदर कौन होता है? सुपरवाइजर्स, वर्कर्स, मैनेजर्स, ये सब लोग होते हैं. सो द इन्वॉल्वमेंट जितना इन डेप्थ होगा, सो दिस इज हाउ सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन इज डिफाइंड. सो इट इज नॉट दैट आप किसी बाहर से एजेंसी ले आए, ना, आप अपने आप भी इंटरनली एक एजेंसी फॉर्म कर सकते हैं जो कि इन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है. अब वो हर एरिया में, हर डिपार्टमेंट में अलग अलग तरीके से कार्यरत होते हैं. So the first thing that you need to identify is that what is required to be done by the safety organization, किस तरह से करेंगे, कैसे करेंगे, and then you keep on defining their roles. So यहाँ पे सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि ये मैनेजमेंट को रिव्यू भी पहुंचाए और जो फैसिलिटी के अंदर जितने भी हैजार्ड्स हैं उनको असेस करें
उसके बारे में जानकारी लें और उसके बारे में जानकारी डाउन द लाइन ट्रांसफर करें। सो ज्ञान को नीचे ट्रांसफर करना है। सो ये परंपरा जिसे बोलते हैं ना, एकदम स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिक तरीके से आपने नीचे तक इन्वॉल्व किया। लेकिन अगर आप ही को जानकारी नहीं होगी, सो वो जानकारी कैसे बनती है? जब ग्रुप ऑफ पीपल बोलते हैं ना, एक सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन आप बनाइए या कमेटी बनाइए, सो वो कमेटी जो है वो डिस्कस करती है कि भाई देखो इस एरिया में ये हैजार्ड्स हैं। अब लेबर वो कमेटी का मेंबर है, उसे ये सारी चीजें एस्पेक्ट समझ में नहीं आएंगे। लेकिन अगर एक मैनेजर है, एक पढ़ा लिखा इंसान है, अच्छे से अगर वो चीजों को समझ सकता है तो वो नीचे समझा भी सकता है। अगर आपने उन्हें समझा दिया तो उसके बाद फिर वो मोटिवेट होकर नीचे अपने डाउन द लाइन लोगों को बता सकते हैं। सो दिस सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन जो हम लोगों ने जो बात किया कि भाई व्हाट आर द चेंजेस, इररिस्पेक्टिव आपका कैसा भी मूड हो, आपका मूड फ्रेश करना, आपको अच्छे से काम करने की परिस्थितियों में डालना, वही सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है। सो दिस इज व्हाट इज द कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन यू कन्वर्ट देम। सो व्हाट हैपेंस? सो दिस इज अबाउट सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन. Now we will discuss second point. Second point is safety committee. So what is safety committee? So safety committees, because we are in India and we are talking about the Indian laws, so every state, every country has their own set guidelines. So safety committee, जैसे OSHAs हैं, तो उसके अंदर safety committee आप सर्च करेंगे तो आपको एक अलग स्टैंडर्ड मिल जाएगा. Similarly, under section 41G of the Factories Act, what does it say? The occupier shall constitute a safety committee consisting of equal number of representative of management and workers. Formulation of safety committee is one of the effective management tool for promotion of safety and making the employees safety conscious. The basic functions are: first, to discuss and formulate safety policy and recommend their adoption by the management, and second, to discover unsafe conditions and practices and determine their remedies, and third, to work to obtain results by having its management approval recommendations but put into practice. So under section 41G, how it is defined? So this is how it is defined. So different safety committees can form, such as Central Safety Committee, which is responsible for the organizations as a whole, the sectional safety committee for dealing with the safety matters, and section level shop site level safety committee for correct unsafe condition, situations, and a lot of useful suggestion ideas will come from these workers. So basically, safety, when we form a safety committee, so everybody knows that section 41G ठीक है लिखा है safety committee होना चाहिए. So हमें ये तो पता है कि सेफ्टी कमेटी होना चाहिए, पर कैसे होना चाहिए, किस तरह से बनना चाहिए. सो सेफ्टी कमेटी के 3 सेक्शनल डिवीजन आप कर सकते हैं. सबसे पहला आता है सेफ्टी कमेटी डीलिंग विद सेफ्टी मैटर्स एट सेक्शनल लेवल. मतलब हर एक डिपार्टमेंट, जैसे एक प्लांट है तो एक फैक्ट्री प्रीमाइसेस है, उसके अंदर अलग अलग प्लांट्स हैं. सो प्लांट लेवल पे, उसके बाद में उन प्लांट्स के अंदर सब डिपार्टमेंट्स होते हैं. सो डिपार्टमेंटल लेवल पे या शॉप फ्लोर लेवल पे, एंड देन फाइनली अप टू द लेबर ऑपरेटर लेवल तक. सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि भाई एक ही तरह के ज्यादा. अब दिस आई एम टॉकिंग ऑफ अ वेरी लार्ज कंपनी. लार्ज कंपनी नहीं है, अगर छोटी कंपनी भी है तो भी वर्कर तक का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए. तो हर लेवल का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए. जब हम लोग डिफाइन करते हैं ना हायरार्की, तो हायरार्की जब डिफाइन करते हैं तो उसके अंदर बोलना चाहिए इस प्लांट में कितने लोग काम करते हैं. भाई सर, टॉप टू बॉटम अराउंड 40 लोग काम कर रहे हैं. ओके, 40 लोग काम कर रहे हैं या 10 लोग काम कर रहे हैं. टॉप टू बॉटम 10 लोग काम कर रहे हैं. तो सेफ्टी कमेटी के कितने मेंबर होने चाहिए? अगर 10 लोग कहीं पे काम कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो 10 लोग काम कर रहे हैं इनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. जैसे अगर एक केमिकल कंपनी के बारे में हम लोग जब बात करते हैं तो भाई एक छोटा सा प्लांट है, एक रिएक्टर है, थोड़ा ब्लेंडर है, थोड़ी मिक्सिंग मशीन है, थोड़ी ड्रायर वायर सब है. सो अलग अलग मशीन्स हैं. ओके, नो प्रॉब्लम. सो सबसे पहले आता है प्लांट हेड. सो प्लांट हेड शुड बी मेंबर ऑफ कमेटी. तो उस प्लांट हेड को क्या जानकारी होनी चाहिए? उस प्लांट हेड को उस प्लांट के अंदर जितने भी इक्विपमेंट काम कर रहे हैं, क्या क्या किस तरह से काम कर रहे हैं, उनकी जानकारी होनी चाहिए. उसके अंदर से क्या क्या चीजें, क्या क्या हैजार्ड्स हो सकते हैं, उनकी जानकारी होनी चाहिए. प्रोसेस के रिलेटेड जानकारी होनी चाहिए. ओके, ये जानकारी उनके पास. उसके बाद में आता है सुपरवाइजर लेवल. अब सुपरवाइजर एक होता है, जैसे बोलते हैं कि भाई प्लांट सुपरवाइजर. तो प्लांट सुपरवाइजर क्या करता है? वो घूमते रहता है और हर एक प्रोसेस के ऊपर मॉनिटर करता है, हर एक प्रोसेस को आइडेंटिफाई करता है कि भाई ब्लेंडिंग
वेल्डिंग हो रहा है, मिक्सिंग हो रहा है, हीटिंग हो रहा है, या रिएक्टर में काम हो रहा है, लोडिंग हो रहा है, ये सारी चीजों के ऊपर वो ध्यान रखता है। तो एक सुपरवाइजर लेवल आ गया। इसके नीचे आता है वर्कर लेवल। अब ये जो वर्कर लेवल है, इसमें से आपको ऐसा एक वर्कर आइडेंटिफाई करना है कि यार ये 5 लेबर काम कर रहा है, इस 5 लेबर में से ऐसा कौन सा लेबर है जो थोड़ा सा लीडरशिप क्वालिटी रखता है या जिसकी लोग बात सुनते हैं। सो हाउ कैन यू आइडेंटिफाई? सो आपने ऐसे आदमी को आइडेंटिफाई किया जिसकी लोग बात सुनते हैं। सो दिस इज हाउ यू नीड टू एक्चुअली सिलेक्ट द कमिटी मेंबर। सो ये इस तरह से आपने कमिटी मेंबर सिलेक्ट किया। नाउ कमिंग टू सेफ्टी इंफॉर्मेशन। सो बेसिकली आई होप आप लोगों को सेफ्टी कमेटी वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे सेफ्टी इंफॉर्मेशन। सो सेफ्टी इंफॉर्मेशन कैन बी गिवन थ्रू एक्सीडेंट एनालिसिस, एजुकेटिव मटेरियल रिलीज पीरियोडिकली थ्रू डिस्प्ले एंड सेफ्टी पोस्टर्स। सो बेसिकली सेफ्टी की इंफॉर्मेशन जो है वो डाउन द लाइन कैसे आएगी? तो सेफ्टी इंफॉर्मेशन बेसिकली क्या होती है कि भी आपके यहाँ पे कोई अगर एक्सीडेंट या एनालिसिस हुआ है तो उसको LFI, लर्निंग फ्रॉम इंसिडेंट्स, है ना, एक छोटा सा बना लीजिए, ब्रीफ बना लीजिए। इसके साथ साथ में एक्सीडेंट एनालिसिस, अगर आपने उस एक्सीडेंट को एनालाइज किया है तो कई बार क्या होता है कि भाई एक्सीडेंट या इंसिडेंट्स होते हैं, हम एनालाइज ही नहीं करते हैं। हाँ ठीक है सर, वो तो छोटा मोटा इंसिडेंट हुआ था, वो कोई बात नहीं, उसके हाथ से हथौड़ी गिर गई थी या उसके हाथ से ये छटक गया था, कोई बात नहीं। लेकिन वो झटका क्यों? वो होना नहीं चाहिए। वाई? बिकॉज यू नेवर think of why it happened, because we only have ideas about blaming an individual, but we never thought of why it happened, because of fatigue, because of his mindset, because of what. So casual factors are more important to be identified when it comes to safety information transfer. So based on those, when you identify casual factors, then you can only work on the safety posters. It is not like you have taken printout from Google and it is there. No, it should be site specific, it should be work specific posters. Work specific posters actually work. See, this is basically visual aids, so all visual aids are required to be site specific. If the visual aids are not site specific, then it is of no use, because the kind of information that you want to transfer down the line, it will not be effective. इट विल बी इफेक्टिव, ठीक है, एक पोस्टर लगा दिया, लोग देखते हैं, ठीक है, समझते हैं, उसके बारे में डिस्कशन भी आप कर सकते हैं, लेकिन इट इज नॉट गोइंग टू बी दैट इफेक्टिव। एजुकेटिव मटेरियल, सो वॉट एवर मटेरियल यू हैव प्रिपेयर्ड टू एजुकेट पीपल is also depending on what type of information you want to transfer down the line. So safety information, how it transfer is very important again. So periodically it is not that एक बार पोस्टर बना दिया और वो सालों साल चल रहा है, ऐसा नहीं होता है। Periodically things change, matter change, so keep on refreshing it. If you have a poster in one place, everybody knows that poster is there, so there is no uniqueness in the place. So the safety information has to be revised periodically. Hence लोग बोलते हैं सर हम लोग पोस्टर लगाया था, 8 महीना हुआ लेकिन वो पोस्टर फेड हो गया। हाँ जी, तो क्या करना था उसका? साल भर 2 साल लगा के रखना था। पोस्टर फेड हो गया, कोई बात नहीं, दूसरा चेंज करो। बट पीपल आर you're there, the investment is not there, so the information, how the information is going to transfer down. So these posters, it is not that you have made once and it is always going to be the same. No, keep on changing them. So whenever you have an refresh information coming in your work premises, तभी तो इंटरेस्ट बना रहेगा ना। आप एक ही पिक्चर 20 बार देखोगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा? नहीं आएगा। So similarly, safety information is also like that. So every element that you discuss in organizing for safety, each element is important. So very short, small information, safety information. So safety information is basically accident analysis, educative material and displays of posters. So but safety information, subpart we will discuss safety posters, but safety information is like accident analysis. So whether we have prepared and learning from incident, no. Whether we have prepared some educative material related to it, no. Whether we have prepared some educative material pertaining to the job, no. So how the safety information is going to transfer? So it is very important that it should be site specific, conditional, and then it should transfer down the line. So this is about safety information. Now coming to safety posters. So what are safety posters? So basically, like we discussed earlier, safety posters. So safety posters is what? Safety posters are mostly
visible evidence of accident prevention at work. So what should be the safety posters focusing on? Evidence of accident prevention at work. But what we do? We put general posters. Wear helmet, wear shoes, wear eye protection, wear hearing protection. No. Safety posters are ideally supposed to be evidence of accident prevention at work. So posters are also useful in supporting special campaigns. For instance, wearing protective. See, these are campaigns. So what are the campaigns? So today we are running wearing protective equipment, PPE related, then maintaining good housekeeping, offering safety suggestions. Posters like promoting traffic, home, and even pedestrian safety for visual educations. So basically poster act as a visual education. So now when we are putting up posters, so primarily for industry it should be focusing on accident prevention at work, but along with that, so there are these accident prevention posters that can be for the entire year or there can be permanent ones, but there are different campaigns. The freshness comes when you divide those incidental data with small update of posters, small posters. So today something has changed. So you can start the discussion. See, when we talked of हम लोगों ने जब बात किया कि भाई when we are talking about safety organization या safety committee और जब उनको responsibility देते हैं तो posters के अंदर क्या होता है? अच्छा, so you just put it there and then the next day when they come you can ask them, हाँ जी, so आज आपकी facility में क्या change हुआ? कुछ आपने नयापन देखा? So it can be a poster, it can be a dummy, it can be anything. So like that you converted their whatever the mindset they came with, but you converted their mindset with acha, new freshness. Yes. So we saw that. Acha, what do you saw? So we saw this. So like that you can change. So these visual education aids, they change a lot of things, lot of mindset of people. So it changes a lot of things. Now coming to safety contest and suggestion schemes. So many organizations have it, but still there are a lot of improvement scopes there. So there are various types of contests that can be conducted based on injury experience, improvement over past records, and non-injury rate consisting of such as slogans, posters, housekeeping. Since accident prevention is closely associated with efficiency, safety suggestions help not only in preventing accidents but also in lowering the cost of production projects, in improving working condition, and in bettering the health and raising the moral of the workers. Posters and other propagandas should urge workers to suggest good ideas and on safety, due to recognizing for these suggestions and due recognition, like if you've taken some suggestions and then you implement it, so this not only gives a noteworthy case but also publishes the factories established in bulletin boards also. So you can have a bulletin board there, you can there you can conduct the first morning meetings. So then you can discuss that, okay, he suggested, so we have implemented this, he suggested. So that gives an external another motivation part. So when here we are only talking about the organizing for safety. So when we are talking about organizing for safety, so all these, how we can do it, how we can organize for safety. So this is another content. So when you have suggestion schemes, so some suggestion came, some say poster came, some अरे शायरी आने दो, let it be a post, short, small poetry, something like that. So when something comes out, you just put it on a board. That gives the happiness, that gives the recognition. So it is like every day an individual. So आज आप बताओ what is there in your mind, what should I write for you? आज ये बताएंगे क्या लिखना है. So this ये बोलते हैं ना कि सुविचार लिखना है. So let the worker be involved, let them. So this changes lot of things. This changes their entire कैसे भी कितने भी खराब मूड में आओ, लेकिन it changes from the खराब mood to the safe working mode. So this is how you should this is the basically content and suggestion scheme. So content और suggestion schemes जो है वो इस तरह से आप कर सकते हैं. ये सब टेक्निक्स हैं, ये सब तरीके हैं फॉर ऑर्गेनाइजिंग फॉर सेफ्टी. इसके बाद आता है सेफ्टी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. सो सेफ्टी एजुकेशन और ट्रेनिंग में क्या होता है? सो सेफ्टी एजुकेशन और ट्रेनिंग में मोस्ट एक्सीडेंट्स इन्वॉल्व व्हाट? अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन.
both results in what? Both are the results of what? Human failure. देखिए, मशीन अपने आप से तो अनसेफ हो नहीं जाएगी, अगर आपने उसे मेंटेन नहीं किया है, ह्यूमन ने मेंटेन नहीं किया तभी वो अनसेफ होगी। अगर आपने कोई चीज इधर उधर रख दी है तो वो अनसेफ एक्ट है, सो दैट इज ऑल्सो ह्यूमन फेलियर। सो अल्टीमेटली देयर इज ओनली वन लाइफ पार्ट देयर एंड दैट इज ह्यूमन। सो व्हेन tools and equipments are used properly, such unsafe acts become major cause of accidents. One method of preventing unsafe act is to train workers in proper use of tools and equipments. Similarly, to eliminate unsafe conditions, workers should be trained to establish and maintain safe working environment. So an effective training program consisting of three essential parts, that is objective of the course, objective, course outline and lessons plan. So whenever you are trying to educate anything, like if you want to educate them on education and training, so what are we going to do? This is the job of a supervisor basically. So education and training, so what are the inputs, what are the things they are doing, what can go wrong. So this is to be understood at grassroots level. If the supervisor is not understanding, the manager should come into picture and train the supervisor and let supervisor do the thing, correct, train the workers. So this is the, so the hierarchy is also maintained. Not even that, because what will happen, ये जो हम लोगों की जो ट्रेनिंग्स हैं ये इफेक्टिव क्यों नहीं हो पाती? साहब लोग सोचते हैं कि हम लेबर लेवल पे जाके उनको सिखा लेंगे, साहब बोल रहे हैं वो सही है, लेकिन जब आप उसको सुपरवाइजर लेवल पे इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करते हो तो क्या होगा? क्योंकि लेबर क्या सोचेगा, साहब तो आते हैं बोल के चले जाते हैं, वो थोड़ी हमारे साथ में काम करते हैं, उनको क्या पता। So ये basic changes हैं. So what are the labor things? They think that okay, you are sitting in an AC office here. What do you know about the shop floor? So whatever you say, they don't take it you seriously. But when you talk, the same things has been given by the supervisor. They will also listen, because the supervisor can say, I also work along with you, dear. I know what is there. So the effect of training differs, and it is not about you just given the session and it is over. No, it is about constantly feeding them with information. So it is about constantly poking them. Oh, no, yes, no, yes, no, yes, no. This what we have to do. This is what you have to do. Don't do this. This is unsafe act. This is unsafe condition. This is unsafe act. This is unsafe condition. Train them constantly. Make them evolve. Let them put the data in their heads. So all this information, जितना ज़्यादा कारगर ढंग से आप ये information वर्कर लेवल पे डाउन द लाइन उनको इनपुट में देते जाएंगे. सो दिस इज अबाउट एजुकेटिंग एंड ट्रेनिंग. सो सुपरवाइजर शुड ट्रांसफर इट डाउन द लाइन. यू शुड ऑल्सो, ऐसा नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप हटी जाओ, नहीं, आपका इन्वॉल्वमेंट रहेगा, डेफिनेटली रहेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो सुपरवाइजर का नहीं सुनते, साहब ने बोला यार ऐसा करने के लिए, एंड देन इवन सुपरवाइजर कैन रिफर यू कि देखो साहब ने उस दिन बोला था ना, वो क्यों बोला था बताया, वो इसके लिए बोला था. ऐसा नहीं है कि साहब भले ऑफिस में बैठते लेकिन उनको ध्यान रहता है, वो आपका केयर करते. सो दिस इज व्हाट यू नीड टू एक्चुअली ट्रांसफर डाउन द लाइन. Now we are going to discuss the final part, and that is the safety training for supervisors. So safety training for supervisor, what is it? So the immediate job of preventing accidents like fall, all these things falls upon whom? So all these things falls upon supervisors. Not because being arbitrarily assigned to him, but because accident prevention and production control are closely associated with the supervising function. So human behavior can be influenced by several factors such as deploying safe work procedures and adhering to them, and teaching workers facts about the cause of accidents and methods of prevention. So these influence are best exerted by well-trained program which can solve many problems. So basically, if the supervisor is trained, so the very first element is that the supervisors are required to be trained. So अगर आपने सुपरवाइजर को ही तैयार नहीं किया है तो डाउन द लाइन वो क्या लेके जाएगा, वो नीचे लोगों को क्या बताएगा. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड एंड रियलाइज दैट व्हाट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड टू बी डन. So there are two parts to it, and first part is
that the supervisor is to first know, पहले तो सुपरवाइजर को पता होना चाहिए कि भी क्या क्या चीजें हो रही हैं आसपास में। अब जब सुपरवाइजर को ये सब चीजें पता चलेंगी तभी तो जाके वो डाउन द लाइन लोगों को बता पाएगा, तभी तो वो जाके नीचे सिखा पाएगा। अगर उसी को नहीं पता है या उसी को उसकी सीरियसनेस नहीं पता है, हाँ तो वो क्या बोले, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, 2 मिनट का काम, तो हाँ ठीक है मैं हूं ना। तो दैट इज व्हाट, so it is very important that first the supervisors have to be trained about it. They are to be told कि what is the human behavior, why this we are doing, so all these things are to be taught to him. So ये basically this ends our organizing for safety. So I hope you have understood all the elements, that safety organization, safety committee, safety information, safety poster, contents and suggestion, education and training for supervisor. So सुपरवाइजर्स का जो इन्वॉल्वमेंट है वो हम लोगों ने लास्ट में देखा कि भी उसका अलग अलग लेवल पे इन्वॉल्वमेंट क्यों आता है। सो आई होप यू हैव लाइक द वीडियो टिल नाउ, एंड इफ यू हैव सीन दिस सो यू हैव ऑलरेडी क्लिक द लाइक बटन एंड यू हैव सब्सक्राइब आवर चैनल ऑल्सो to get further notification of the videos. And if you are learning this as a course, so then I hope you have understood all the aspects of it. So let us now we will be seeing the third element, and that will be material handling.